Ninth class, this is the second video of chapter number 8, motion. So we have discussed some terms in our previous video, that was scalar quantities, vector quantities, distance and displacement. Okay, so we know what are scalar quantities, which has only magnitude and they don't have directions. For example, time, distance, temperature, etc., energy also. And vector quantities are those quantities which has both magnitude and direction. That means they require direction. We call them vector quantities. Example, force, momentum and so on. We will discuss a lot of terms as our syllabus is going on. Okay, so next term was distance. Distance was the actual path covered by an object. Distance is actual path. And displacement was the shortest path between initial and final point. Okay, so these were the terms we have discussed in our previous classes. Let us go for some more terms related to motion. We will study mechanics. The chapter we are studying, this is a chapter of mechanics. Mechanics means which deal with the matter around us. Okay, mechanics में हम study करते हैं दो चीज़ों की, एक्चुअली तीन चीज़ों की करते हैं, बट हमें भी एक बार इस चैप्टर में दो करना है. सो मैकेनिक्स इज all about statics and kinematics, and third one is dynamics. These are some terms जो हमें बस एक आइडिया होना चाहिए कि इनका क्या मीनिंग होता है. Static means study of object at rest. When object is at rest, that is the study of that branch, we call it statics. Okay, next is mechanics. Mechanics की second branch जो है वो है kinematics. So kinematics में क्या होता है, study of object in motion. कि when object is moving, the study of that motion is called mechanics. So kinematics. And dynamics means study of cause of motion. कि motion क्यों हो रहा है. That means are we applying some force? Is there any source of energy by which motion is going on? So in our chapter number 8 we are studying about statics and kinematics, and in dynamics that is chapter number 9. Okay, there are some more terms. Let us discuss the type of motion according to the coordinates. Types of motion as per coordinate system. Can you tell me how many coordinates we have? How many axes we have? So you have studied only about x-axis and y-axis, but there are total 3 axes, that is x-axis, y-axis and z-axis. We call it 3D world. So there are 3 types of motion according to coordinate system. One is one-dimensional motion, two-dimensional motion, and third, three-dimensional motion. Okay, so we have 3 types of motion. One is one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional. If I ask what is one-dimensional motion, so that means only one of the 3 coordinates are enough. Only one of the 3 coordinates is enough to explain the motion of an object. We call it one-dimensional motion. Let us take an example. If a person is moving in a straight line, that means we need only x-axis, or a rocket is flying in upward direction, we need only y-axis. So this is the thing that we can explain by one-dimensional motion. We can take example of motion of a train along a straight railway track, that is motion in 1D. An object is falling freely under the gravity. अगर किसी चीज़ को हम ऊपर से छोड़ देते हैं, that is also one-dimensional motion. And if an object is moving in straight line, so these are some examples of motion in one dimension. So you can write motion in a straight line. Motion in a straight line. Okay. Second one will be motion in a plane. Plane means when we need 2 axes. And third one will be motion in space. Space means 3 dimension. Okay, let us take some more examples for 2D and 3D. So motion of queen on a carom board, जो हमारी carom board होती है जब हम carom board play करते हैं, so the motion of that is 2-dimensional motion. ठीक है. And similarly we can take, if we throw any object in at a particular angle. Okay, जैसे मान लेते हैं हमने इसको ऐसे फेंका, ठीक है, we throw this, तो ये इधर से इधर गया. If we observe, इसने horizontal distance भी travel किया, इसने vertical distance भी travel किया. So this is 2-dimensional motion. And 3D के अंदर क्या आएगा? Motion of a sparrow, चिड़िया उड़ रही है. Motion of fly bee, motion of aeroplane, motion
Such type of motion are 3D motion. What will you say about motion of planets around Earth? They will be 1D, 2D or 3D. Motion of planets. So this will be 2D क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं. ठीक है. These are the types of motion according to कोऑर्डिनेट सिस्टम. और हमारे पास जो टाइप्स होते हैं, दिस वाज अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मोशन, कि वो मोशन कैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या टाइप होते हैं हमारे पास. सो वी हैव linear motion. So we have three type of motion: linear motion in a straight line, rotational motion around a circle, and if someone rotates along its axis, जैसे कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है, that is rotational motion. When we switch on the fan, that is also rotational motion. And if we are driving the wheel of a car. Next is oscillatory. Oscillatory means vibration. When things are in vibration, we will call it oscillatory motion. Okay, so these are some terms. The next topic is speed and velocity. Okay, before that we will learn two more terms. If we are in motion, so we will say there are two types of motion. We can say one more thing, कि according to the nature of speed or velocity. So before that we will understand what do you mean by speed and velocity. So what do you mean by speed? Speed is nothing but it is the ratio of distance and time. We call it how much distance you are traveling during a unit interval of time. That means how much distance you are traveling in 1 second, how much distance you are traveling in a minute, how much distance you are traveling in an hour. Okay, so when we take time as one, maybe 1 second, 1 hour, 1 day, that will be the speed. Let us say I say कि a person is walking 15 kilometer every day. So you will say the speed is 15 kilometer per day. Okay, if he is going with the same speed, how far he will be after 10 days. So you can easily say कि अगर एक दिन में 15 किलोमीटर चलता है तो 10 days में 15 into 10, that is 150 kilometer. Okay, the speed is distance upon time. Okay, it is a scalar quantity. Speed is scalar because distance is scalar, time is scalar. Okay, so it is scalar. And velocity is displacement upon time. That means the distance in a particular direction divided by time, we call it velocity. Okay, so these are a little bit same things. On the basis of speed and velocity, we also made two more categories of motion, that is uniform motion. So there are two more categories. One is uniform motion, second is non-uniform motion. So what do you understand by the term यूनिफॉर्म मोशन? सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर आपकी स्पीड सेम है, दैट मीन्स इफ यू आर वॉकिंग विथ सेम स्पीड यू विल कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. इसे हम बोलते हैं कि व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज देयर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. स्पीड और वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होती है. अब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती. वी विल कॉल इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? व्हेन unequal distance travel in equal interval of time. So let us write the definition. Uniform means, these are the definition for uniform motion: equal distance traveled in equal interval of time. That means, let us take an example. A person who is walking, the time is, say कि a person is walking 2 meter every second. That means first second he traveled 2 meter, next second 2 meter, next second again 2 meter, next second again 2 meter. So we will say that person is in uniform motion with a speed of 2 meter per second or velocity of 2 meter per second. That means कि उसकी speed constant है. This is not speed by velocity, this is speed slash velocity. That means speed and velocity दोनों की दोनों क्या होगी? कांस्टेंट होगी. ओके, सिमिलरली अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब आप इन दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से देखो. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही हमें कंपेयर करना है. ओके, व्हेन वी कंपेयर वी टेक टाइम. ओके, टाइम को हम कंपेयर करते हैं कि फॉर ए पर्टिकुलर व्हाट विल बी द डिस्टेंस. इफ आई से ए पर्सन इज ट्रेवलिंग 2 मीटर for first second, a person travel 2 meter for first second. After that
2 मीटर, आफ्टर दैट 4 मीटर, आफ्टर दैट 3 मीटर, आफ्टर दैट 7 मीटर, तो वो अपनी वेलोसिटी को बार बार चेंज कर रहा है. दैट मीन्स एवरी सेकेंड उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है. सो वी विल कॉल इट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर वो फर्स्ट सेकंड 2 की स्पीड से चल रहा है, नेक्स्ट टाइम 3 की स्पीड से चल रहा है, दैट मीन्स उसने अपनी स्पीड को 1 बढ़ा लिया, एंड आफ्टर दैट 3 से वो 5 पर आ सकता है, 5 से वो फिर से 2 पर आ सकता है. सो दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. ओके, एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड. तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी नो कि इन विच स्पीड इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड और वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आई से यू आर riding a bike or a scooty, it's your choice, on a busy road, so which type of motion will be there? Busy road means traffic काफ़ी है and कभी गाड़ी आ रही है, कभी आपको सड़क खाली मिल रही है. so question is कि what type of motion is that, whether it is uniform motion or non-uniform motion. So your answer will be non-uniform motion is the right answer. Okay, so this is how we can understand uniform and non-uniform motion. Okay, so what is speed? The total distance upon total time. ठीक है, distance upon time is speed. So now we will categorize speed or velocity into 2 categories. One is average and other is instantaneous. So we divide our speed or velocity into 2 categories. One is average and other is instantaneous. Let us discuss what do you mean by average and instantaneous. Let us take an example. I say कि you want to go from here to Delhi. Okay, let us take यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है. ठीक है, the distance between our location हिसार and Delhi is 200 किलोमीटर approximately. हम एक बार मान लेते हैं. Okay, so if I say कि if you drive your car or your bike विद 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर आप हर घंटे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करो, सो यू विल बी एट दिल्ली आफ्टर 4 आवर्स. ओके, दैट मीन्स कि हमने डिस्टेंस कितना लिया है, दैट इज 200 किलोमीटर, टाइम इज 4 आवर्स. तो हम 50 की स्पीड से चलाएंगे तो 4 आवर्स में पहुंच जाएंगे. बट इफ आई आस्क कि इज इट पॉसिबल टू ड्राइव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50, आंसर इज नो, क्योंकि देयर विल बी सम कर्व्स ऑन द रोड. जब हम चलते हैं गाड़ी में तो रास्ते में मोड़ आते हैं. ठीक है, तो जब हमें गाड़ी मोड़नी होती है, व्हेन वी वांट टू टेक टर्न, वी कांट मेक अ टर्न विद हाई वेलोसिटी. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टू डिक्रीज आवर स्पीड और वेलोसिटी. ओके, हमें अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है. बट वट इज़ दैट 50? अगर आप 50 से चलोगे तो 4 घंटे में पहुँच जाओगे. वी कॉल इट एवरेज, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो एवरेज इज total distance if we are finding speed, and for velocity we will take total displacement upon total time. Okay, for speed we will take total distance upon total time. And instantaneous speed, this is the speed which is shown by our speedometer. जो हमारे व्हीकल्स में स्पीडोमीटर होता है, which tell us द डिस्टेंस, द स्पीड ऑफ द व्हीकल. ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसमें होता है ओडोमीटर. सो देयर आर 2 डिवाइसेस इन आवर व्हीकल्स. वन इज ओडोमीटर टू टेल हाउ मच डिस्टेंस वी हैव कवर्ड, एंड अदर इज स्पीडोमीटर टू टेल अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड. आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो द नीडल दैट विल ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग. दैट मीन्स कि आपकी स्पीड एवरी सेकेंड चेंज हो रही है. दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. दैट मीन्स the speed at a particular point, we call it instantaneous speed or velocity. Okay, so odometer measure distance, speedometer measure instantaneous speed. So which speed or which velocity we use in our daily life? Answer is instantaneous. Average is just an idea कि how much time we will take. Okay, it will take. So अगर हम यहाँ से 50 की स्पीड पर चलते हैं तो हमें कई बार अपनी स्पीड को 60 भी करना पड़ सकता है, 70 भी, एंड कई बार हमें उसको 20-30 पर रखना पड़ता है. तो दैट्स मीन स्पीड इज चेंजिंग. ओके, सो दिस इज about speed and velocity. We know uniform speed, that means the speed is constant for all the path,
and variable speed which is changing. Okay, average speed is total distance upon total time, average velocity total displacement upon total time, instantaneous speed speed at any given point. Okay, instantaneous velocity velocity at any given point, uniform velocity that is constant velocity, non uniform velocity which keep changing. Okay, so these are the some terms related to motion. एक बार यहाँ तक नोट कीजिए. So these are the terms we have studied: average speed and velocity. Speed and velocity are not same thing. Speed means a scalar quantity, distance upon time. Velocity is a vector quantity, displacement upon time. Okay, so we have average speed and average velocity. Average speed means total distance upon total time. Average velocity means total displacement upon total time. Uniform speed means when we don't change our speed, that means a constant speed. Similarly, uniform velocity means a constant velocity in a particular direction. Variable speed means if we are keep changing our speed or velocity. Okay, let us say we have taken the example of a busy road. Busy road पे क्या होता है, we use variable speed, क्योंकि हमें कभी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कभी स्पीड तेज करनी होती है, कभी कम करनी होती है. Instantaneous speed is the speed at a particular point. Okay, these are some points regarding speed and velocity. Now the next is feature of uniform motion. So what do you mean by uniform motion? Uniform motion was that when equal distance traveled in equal interval of time. Okay, so here are some 5 or 6 points in your screen. You can take a screenshot of that. So the first point is the velocity in uniform motion does not depend on the choice of origin. इसमें हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड हमें सेम रखनी है. ओके, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ टाइम इंटरवल. इससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं. लेट अस से द पर्सन इज गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम 10 AM to 4 PM. सो आप 10 से 11 वाला इंटरवल लेंगे तो भी स्पीड सेम आएगी, और 1 PM से 2 PM वाला लेंगे तब भी स्पीड सेम ही आएगी. ओके, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन. यूनिफॉर्म मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस. दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं एंड दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स यू कैन टेक अ नोट. सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस related to average speed and average velocity. Let us take an example. I say कि a person, there is a question on your screen. A car covers the first half of the distance between two places at the speed of 40 km/h and the remaining half with a speed of 60 km/h. Find the average speed of the car. तो that means कि इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास ये कोई रास्ता है. Let us say this road is AB. So इसने जो शुरू का हाफ है, let us say this point is C. This is to be covered with the speed of 40 km/h. Okay, and the second portion it is covered with the speed of 60 km/h. So you have to tell what will be the average speed of that person along the whole journey. यानी कि पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी. So take a time, pause your screen for 2 minutes and try this question. After that we will see the solution. Okay, let us see the solution. Most of the students have read this formula कि there are two speeds, then u plus v by 2, that is 40 plus 60 by 2, you will get 100 by 2, that is 50 km/h. This answer is absolutely wrong. Okay, we use this formula when the time interval is same but their distance is same. Distance means इन्हें क्या है, पहला half and second half. Let us say this distance is x, so this distance is also x. अब सोच के बताइए कि x को इसने 40 की स्पीड से, x 60 की स्पीड से, तो ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है. आंसर है फर्स्ट पोर्शन में, कम टाइम सेकंड में लग रहा है. एंड दिस फॉर्मूला वी यूज व्हेन द टाइम इज इक्वल. सो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला. सो व्हाट विल वी यूज? वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज total distance upon total time. So what is total distance in this question? Total distance is AC plus CB, that is x plus x, that is 2x. This is the total distance. Since speed is in kilometer per hour, so let us take this is distance is in kilometer. Okay, now
we know the distance, so how will you find time when distance is given? So we know speed is equals to distance upon time, so time will be distance upon speed. Okay, for first portion what will be the time? t1, distance कितना? x, speed 40 hours, क्योंकि किलोमीटर एंड आवर्स है. सिमिलरली t2, टाइम नंबर 2, दैट विल बी x अपॉन 60 hours. So total distance 2x, total time t1 plus t2. So what will be the average speed? So v average will be 2x, that is total distance upon time t1 plus t2. Let us put the value 2x as it is divided by t1 plus t2. t1 is x by 40, t2 is x by 60. You know how to solve this question? Okay, take the LCM. You will get LCM of 40 and 60 as 240, and after solving this you will get 2x into 240 by 10x. Answer will be 48 किलोमीटर पर आवर. इस तरीके से आंसर 50, इससे आंसर 48. इफ दिस क्वेश्चन केम इन MCQ, बोथ ऑप्शंस विल बी देयर एंड करेक्ट आंसर विल बी 48 किलोमीटर पर आवर. याद रखें, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम. वी कांट यूज व्हेन distance is same. So you can remember these formulas by, if time interval is same, then V average will be V1 plus V2 by 2. Okay, and if distance is same, we use V average is 2 V1 V2 by V1 plus V2. You can say this is a shortcut, but you can derive this formula very easily. So, otherwise this is the best method. Find total distance, find total time. It will hardly cost you around a minute, but you don't need to remember extra formulas. Okay, so this is how we can find average speed. Okay, I will provide you a worksheet in the description link. From there you can download that worksheet and practice such type of question. Okay, thank you.